So hello everyone. Today we have Khushhali Solanki with us, who has secured All India rank 61 this year in civil service examination. And this is her third attempt. First attempt she has taken in 2021, and in that attempt she could not qualify prelims. And second attempt was in 2022. She went till interviews, but finally could not make it to the list. And it is her third attempt and 61 rank. Congratulations, Khushhali. Thank you very much, ma'am. So how are you feeling now, Khushhali? You have achieved your dream? Yes, ma'am, I finally achieved it, but I think that it is just one step, and now the journey is all ahead of me. So I will Yes. give my best. Yeah, this is just the beginning. Beginning. It's a long journey now as a civil servant. Khushhali is from Bikaner, Rajasthan, and by qualification, she is a civil engineer BTech. BTech she has done from NIT Surat. Yes, Yeah, ma'am. so from Rajasthan to Surat. Schooling and all, everything in Rajasthan? Yes, ma'am. सो ये सपना कहाँ संजोया आपने यूपीएससी एग्जाम देने का? शुरू से था या कॉलेज में आके हुआ या फिर कॉलेज के बाद हुआ? मैम, ये सपना एक्चुअली मेरी मम्मी ने एंड पापा ने दिखाया था, बिकॉज माय मदर यूज टू गो टू द विलेजेस। वो जिला परिषद में पहले काम करते थे एज अ सिविल इंजीनियर। तो व्हेन शी यूज टू वर्क विद द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड गांव में जाते थे, तो वो मेरे को अपने आके एक्सपीरियंसेस बताते थे। तो आई ऑल्सो नाउ अब मेरे इंटरेस्ट जो मैंने डैफ में भरा था वो भी यही था कि मैं आई यूज टू गो विद माई मदर, एंड हम वहाँ जाते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस को विजिट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं एंड उनको एक सोल्यूशन की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो आई थॉट कि लेट्स जस्ट टर्न इट इनटू अ करियर इटसेल्फ, एंड दैट्स हाउ एक मोटिवेशन आया था सिविल सर्विसेज का। सो राजस्थान के विलेजेस में आप जाते थे तो आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या दिखी जहां आपको लगा कि हाँ, मतलब आई शुड हैव बीन हियर एंड आई वुड हैव वर्कड फॉर दिस, आई वुड हैव फाउंड अ सॉल्यूशन टू दिस? मैम, मैक्सिमम प्रॉब्लम वुमेन रिलेटेड हुआ करते हैं, जैसे सोशल इश्यूज में चाइल्ड मैरिजेस रहे हैं यस। काफी, एंड उनको स्कीम्स का ही नहीं पता होता है मैम। मोस्टली हमारे पास सब चीजों के लिए है स्कीम्स, बट द अवेयरनेस लेवल वो लो रहता है। तो वहां पे एक कुछ हो सके मेरी तरफ से तो उसको मैं करने की कोशिश करती है, एंड देन इनोवेटिव आइडियाज आई यूज टू थिंक कि मैं किस तरह से इम्प्लीमेंट करूंगी कि एक बिहेवियरल चेंज आ पाए। चलो, now God has given you that opportunity. यस And मैम। Khushhali, your optional is PubAd, Public Administration. यस। So from civil engineering to public administration, and see, public administration is also a subject जो कि पिछले कुछ सालों से people have not been opting for it. Of late now again, public administration, we can see results from public administration. So why did you zero down for public administration? मैम, उस टाइम जब मैंने पहला अटेम्प्ट 2021 में दिया, लेकिन मैंने ऑप्शनल जो सब्जेक्ट चूज करना एंड पढ़ाई चालू करना वो मैंने अपने कॉलेज के सेकेंड थर्ड ईयर से चालू कर दी थी। अच्छा। तो तब 2019-20 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से काफी लोग आया करते थे उस टाइम पे, एंड मार्क्स अच्छे मिल रहे थे, सिलेबस कम था, एंड जो अब आगे हमें करना है एज अ सिविल सर्वेंट वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने सिखाया है पहले ही। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि लेट्स टेक दिस जो आगे काम आने वाला है। बट अब उसके नंबर कम हो गए। आई वॉज इवन थिंकिंग कि प्रोबेबली इस बार नहीं होता तो मैं चेंज करूँ या ना करूँ, बट हो गया तो आई एम वेरी हैप्पी। So, Khushhali, you said like you started preparing the optional subject from third year of your college, second or यस third year. मैम। यस। So, like you were at NIT, वहाँ पे भी serious studies आपको time चाहिए, and then फिर आपने PubAd, all different, completely different domain from your civil engineering subject. So, how could you manage it? मैम, मेरा ध्यान रहा है हमेशा से कॉलेज की स्टडीज में भी, एंड आई वाज वन ऑफ द टॉप 5 रैंकर्स हमारे बैच में। बट एक साइमल्टेनियसली ही था कि ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट में करनी है, लेकिन जो आगे करियर उसमें बनाना है वो सिविल सर्विसेज है। तो आई यूज टू टेक आउट माई टाइम कॉलेज की क्लासेस के बाद में डेडिकेटेडली एटलीस्ट 3 घंटा अगर पूरे दिन में निकाल पाती थी तो आई कंसिडर्ड इट सफिशिएंट उस टाइम पे। तो इस तरह से एक एक क्लास रोज किया करती थी। थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रिड्यूस हो गया था,
Mhm. डांस, ड्रामा, म्यूजिक, इन सब में थोड़ा पार्टिसिपेशन कम जरूर करना पड़ा था बैडमिंटन में जैसे, बट इवेंचुअली आई मैनेज। एंड देन जो एक चीज हो गई थी वो आ गया था कोविड। तो कोविड में घर आने के बाद में लोड काफी कम हो गया था पढ़ाई का, कॉलेज की स्टडीज का, तो दैट्स व्हाई आई Mhm. वाज एबल टू डिवोट माय टाइम ऑन। Okay. So, Pabad, you started in the third year of your college. And what about GS? Were you doing it parallelly or you focused on GS after your college? No, ma'am, I was doing both of them parallelly. Oh, so it was like very interesting to know because three things you were doing GS, optional, and your civil engineering. Yes. Yeah. So, Pabad, how is this optional, Khushhali? Ma'am, public administration syllabus has a good overlap with GS2 and some topics with GS4. So, as an optional, it's really very good because the type of questions asked, the current events and the happenings which are taking place, like issues related to governor or speaker or the parliament, etc., they are very much relevant in today's time. So, from the perspective of a subject, this is definitely very good, but it requires a kind of skill in answer writing to understand the questions. The question difficulty level is somewhat hard to interpret them, so that definitely requires practice, and that's why I think that the marks are quite low. The average itself is quite low, but I feel if one person can have 300 or something above that, then I think it becomes doable by all. So, did you join a test series or how did you practice your answer writing for the optional? Yes, ma'am, I have joined many test series since I had done my course in 2020 itself. So I had the opportunity of doing it again and again, revising it. And simultaneously, even when I could not clear pre in 2021, I joined the test series for optionals. So that my answer writing practice is there. So I have joined around 5, 6 test series. Okay. So, Khushhali, now let us talk about GS part. How did you prepare for GS? And because you have a very good marks in your GS also, 842 marks are there for your GS. So, how did you prepare for GS and how you improvised from your second attempt to third attempt? Like there's a big jump in your marks. Yes, ma'am. Ma'am, for GS, I did the note making by seeing each and every inch of the syllabus. For example, it says poverty in the syllabus of GS3. So, from definition of poverty to the formulas for it and the committee recommendations, the current events, all of that I used to write on one single page so that it becomes a crisp revision thing. So, both for prelims and mains, it was very helpful. So, note making was done by this. And now the special things which could make my answer look different was writing the case studies based on my personal experience of the villages. Okay. So yes, ma'am. So that thing was there, and writing examples or making diagrams, drawings, flowcharts, and even writing quotes in some of the answers. That was the extra thing which I had done, and most important was my writing my personal examples, because that I think no one else would be writing. So that was Mhm. a different thing. So, that would have helped you in your paper for ethics paper. Yes, ethics also, GS3 also, GS2 also, and even PubAd paper 2 also, because it's about polity governance, so that was helpful. So it means like if you have some related experience, you can somehow manage to showcase that in your answers if it is fitting into your answer. Yeah. Yes, ma'am, exactly. So you Yes. made flowcharts also, you made diagrams also in paper one as well. Of course, geography is there, but apart from Geography. geography, in any other subject like history. Ma'am, ma'am, in history, there was a question regarding how it was an interconnect between history and geography, how geography has Yeah, played a role in defining history. So in that, culture. I made some Yeah. diagrams. Yes, ma'am. Okay. So you If have to make diagrams, yes, ma'am. अगर diagrams नहीं बन रहे थे तो I used to make flow chart or write in point so that monotonicity जो है वो आंसर ही खत्म हो जाए. Yes, because GS generally the content is similar with all the aspirants. Yes. So the way you are representing it, that is something where you score the marks. And Yes. Khushhali, you have also been part of our essay guidance program. And GS answers also you have written with us, and you have been part of our IGP program also. IGP. So Yes, ma'am. overall, how has been your experience with Next IS?
मैम जो सबसे ज्यादा मुझे खुशी थी इंटरव्यू के टाइम पे वो ये थी कि नेक्स्ट आईएएस ने सिविल इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से पढ़ा दी थी। द वे सर यूज टू डिस्कस अबाउट जो टेक्निकल डिटेल्स जो अब क्योंकि टाइम हो गया कॉलेज किए हुए, तो उस सिविल हाँ। इंजीनियरिंग का सारा मटेरियल उसमें जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, तो दैट वाज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ एंड वीडियो, सो दैट वाज रियली वेरी हेल्पफुल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव गिवन मॉक्स एट नेक्स्ट आईएएस आल्सो, एंड जो कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट हुआ था बिकॉज ऑफ द मार्क्स दैट बोर्ड ने दिए थे, तो आई वाज वेरी हैप्पी। एंड मेंस के टाइम पे आई यूज टू डू दी ऐसे टेस्ट सीरीज जो आप जो करवाते थे उस टाइम पे, आप जिस तरह से एनालाइज करवा रहे हैं, तो आई लाइक दैट वे बिकॉज ब्रेकिंग द टॉपिक एंड देन राइटिंग उसका एनालिसिस एंड देन गिविंग इट्स एग्जाम्पल, ये जो एक मेथोडोलॉजी थी तो वो आप करवाते थे, तो आई यूज टू लाइक इट अलॉट। So overall, you have a very good experience with next IS. So खुशहाली, अभी जो है आपने पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स को क्लियर नहीं किया, दूसरे में आपने प्रीलिम्स कर लिया, तो व्हाट वर योर लर्निंग फ्रॉम द फर्स्ट अटेम्प्ट दैट यू इम्प्लीमेंटेड इन द सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट? यस मैम, मैम फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया, एंड अच्छा। आई जस्ट स्टडीड फॉर 2 years एंड आई गेव द पेपर। बट एक स्ट्रैटेजी मिसिंग थी कि वहां जाके पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, तो बिकॉज ऑफ दैट 4-5 नंबर की वजह से वो रह गया। तो इन नेक्स्ट अटेम्प्ट आई मेड श्योर कि आई गिव 100 मॉक टेस्ट, मैंने 100 मॉक टेस्ट दिए एंड आई एनालाइज Big की number. It's a big number. So 100 mock test means every day you were एवरी डे। writing. यस Yeah. मैम, every day in the same time period 9:30 to 11:30 because I wanted कि brain फिर उस टाइम पे काम करने लगे। Yes, 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 yes. Yeah. So that simulation I used to give to my brain and then उसके बाद में उसको analyze करना कि मेरा sweet spot of answer वो टिकिंग क्या है। जैसे मुझे पता चला था कि अगर मैं 50-50 से नीचे वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ जिसमें आई एम ओनली 30% श्योर, तो वो मोस्टली गलत होते थे। तो मेरे को ये पता चल गया कि 90 क्वेश्चन से ऊपर नहीं जाना है, अगर ऐसा करूंगी तो गलत ही होगा। तो दैट्स वाई मैं हमेशा लेस देन 90 एंड अबव 75 ये वाला एक रेंज लेके चलती थी कि इस नंबर में अटेम्प्ट करना है। बिकॉज 100% क्वेश्चन आते हो वो आई थिंक अब सिर्फ 25-30 रह जाते हैं पूरे पेपर में। उसके बाद यू विल नो 80%, 70% एंड 50-50। तो उसमें फिर एक जो गेस वर्क वाली जो चीज जो एक इंटेलिजेंट गेसिंग होती थी वो मॉक टेस्ट से आई थी। तो दैट्स व्हाई सेकेंड अटेम्प्ट में फिर मेरे काफी अच्छे नंबर आ गए थे प्रीलिम्स में। What's the ideal time to start writing tests? मैम मॉक टेस्ट आई थिंक सेक्शनल टेस्ट अगर कुछ एक चीज हो रही है, एक सब्जेक्ट हो रहा है तो दे सकते हैं, पर जो फुल लेंथ टेस्ट है वो पूरा सिलेबस होने के बाद में देंगे तो इट विल हैव मोर कॉन्फिडेंस कि हम ये अब कर सकते हैं। अगर पहले ही देने लगेंगे और नंबर नहीं आएंगे तो इट वुड बी वेरी डिमोटिवेटिंग। Demotivating, yeah. And what about your mains? मेंस का जो टेस्ट है, आप टेस्ट सीरीज आपने प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट की, या एक बार जब आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ उसके बाद आपने पूरे साल मेंस के टेस्ट सीरीज वगैरह भी साथ साथ लिखे? क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? यस मैम, मेरा पीयर ग्रुप काफी अच्छा रहा था, ऑनलाइन ही मुझे फ्रेंड्स मिले थे, तो हम सबका ही प्रीलिम्स नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट स्टिल वी वर लाइक कि नेवर माइंड, विल राइट द मेंस आंसर फॉर नाउ। तो फॉर 4 मंथ्स हमने मेंस आंसर की प्रैक्टिस करी थी, फिर प्रीलिम्स से 3 महीने पहले वी स्टार्टेड राइटिंग प्रीलिम्स टेस्ट। तो एक था कि हाँ मेंस के आंसर्स पहले ही लिखने, क्योंकि लास्ट का ये जो 3 महीना होगा प्रीलिम्स के बाद वाला, उसमें इट्स नॉट द करेक्ट टाइम कि आप लिख भी रहे हो, एनालाइज भी कर रहे हो और पढ़ भी रहे हो और करंट इवेंट्स भी मैनेज कर रहे हो। सो दैट्स वाई आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पहले से रखी थी मैंने। और वो पीयर ग्रुप में से कितने लोग अभी जो है फाइनली उनका सिलेक्शन हुआ? मैम वी वर 6 पीपल एंड उनमें से 5 का हो गया। Very good. So a good peer group is also very important. यस एंड इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप फिजिकली रोज मिल रहे हो, बट ऑनलाइन भी अगर इफ यू हैव अ गुड पीयर ग्रुप फॉर द प्रिपरेशन, दैट रियली हेल्प्स। या। यस मैम। सो एंड खुशहाली, हाउ डिड यू मैनेज सीसैट? और मैम सी सेट इनिशियली इजी आया करता था, 2021 का इजी था, फिर 22 में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई होने लग गया था, तो आई डिड प्रैक्टिस में जो यूट्यूब पे कुछ फ्री वीडियोस अवेलेबल होते हैं सी सेट के, तो टॉपिक वाइज आई यूज टू सी दोज वीडियोस कि जैसे प्रोबेबिलिटी में थोड़ा कम आता है तो उसको देखती थी, एंड
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी किस तरह से टेक करना है, कैसे उसको इंटरप्रेट करना है, इस सब के वीडियोस मैंने ऑनलाइन ही देखे थे ऑन यूट्यूब। एंड देन उसके बाद में मैं मॉक टेस्ट दिया करती थी। अगर उसमें नंबर मेरे 100+ स्कोर हो रहा था सी सैट में, तो फिर होता था कि ठीक है अब आता है। And comprehensions and all, how do you manage that? Because right now they are very lengthy also, comprehensions, यस, and people यस, have that problem of time management. यस मैम। उसके लिए सबसे पहले मैं कॉम्प्रिहेंशंस को ही अटेम्प्ट करती थी पेपर में, सो दैट जो एक फ्रेश माइंड, जो स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड है वो एकदम फ्रेश माइंड से होता है, जब टेंशन थोड़ी कम होती है। लास्ट में जैसे टाइम कम रहता है तो यू आर वेरी मच नर्वस, एंड Then, तब अगर इतने बड़े बड़े पैराग्राफ दिखेंगे तो वो पढ़ा भी नहीं जाएगा। तो दैट्स वाई मैं कॉम्प्रिहेंशंस को पहले किया करती थी, एंड मैं ब्लैक पेन से उसको अंडरलाइन करती चलती थी कीवर्ड्स को, सो दैट फिर नीचे से मैं ऊपर देख पाऊँ कि हाँ ठीक है ये कीवर्ड यहाँ है तो इसका आंसर यहीं कहीं होगा। तो mm-hmm. इस तरह से लंबे वाले टैकल हो जाते थे। उसके बाद में जैसे अराउंड 30 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं, उसके बाद में जो इजी होते थे मैथ्स वाले कुछ क्वेश्चंस, तो उनको अटेम्प्ट करके मैं 50 से 55 करके फिर छोड़ देती थी। Uh, Khushhali, did it ever come to your mind that first attempt में हुआ नहीं, अब छोड़ो यार ये, this is not something like I can do, or what was your inner motivation? मैम, फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ था, एवरीवन वाज सेइंग कि नेवर माइंड फर्स्ट ही अटेम्प्ट है, बट आई सेड कि आई हैव स्टडीड फॉर 2 years एंड देन हैव गिवन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आई वांटेड टू से टू माई सेल्फ कि अगर मैंने 2 साल लगाए हैं एंड अगर मेरा शुरू से ही मोटिवेशन इसी की तरफ रहा है, सो आई शुड ट्राई वंस अगेन। एंड जब दूसरी बार ट्राई किया एंड अगर मैं सिर्फ 23 मार्क्स से मैं रही थी इंटरव्यू फाइनल उसमें लिस्ट में, सो आई सेड कि जस्ट 23 मार्क्स एक और बार दूंगी तो ये तो कवर हो ही जाएगा। सो दैट्स इट। And Khushhali, you said ki, because you were preparing for this simultaneously with your college studies, and so you could not give much time for your interest areas like dancing, you said, badminton, you said. Then how did you manage the stress? Because stress level become very high. यस मैम। मैम बैडमिंटन जब तक कॉलेज में थे तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के खेल लेती थी, बट क्योंकि कोविड में घर आने के बाद में कोई कुछ नहीं था Yes. करने के लिए, तो आई हैड 2 dogs विद मी, Okay. पेट्स। तो आई यूज टू स्पेंड अराउंड हाफ एन आवर टू 1 hour with them, so those were stress relievers. Yes, because see, this whole process of this examination is quite tedious and very stressful also. So you should have some kind of a outlet for your stress also. So Khushhali, what would you suggest to the would-be aspirants how they should prepare? What are the do's and don'ts that they should follow for this exam? What is your message to them? मैम, आई वुड लाइक टू से कि ट्रस्ट योर सेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इस जर्नी में बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हर स्टेप पर फेलियर्स आ सकते हैं। मेरे को भी प्रीलिम्स में भी आया, फिर फाइनल में भी आया, एंड इवन फाइनल रिजल्ट के 4 दिन बाद अगला प्रीलिम्स था। Yes. So what you need to do is just tell yourself that you have done your best, and अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। बट सिर्फ एंजाइटी में नहीं रहना है, हमें एंजाइटी होनी चाहिए, बट वो हम पर इतनी हावी ना हो कि हम कुछ कर ही ना पाए। तो दैट्स द मैसेज कि आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रस्ट करिए कि इतनी मेहनत करी है तो जरूर इसका फल मिलेगा आगे जा करके। हताश नहीं होना है किसी भी स्टेज पर, इज व्हाट आई वांट टू से। यस, इस एग्जाम में अगर आपने मेहनत की है तो लाइफ में, आई वुड नॉट से कि लिस्ट में नाम है या नहीं, बट लाइफ में एग्जैक्टली, हताश लाइफ होने में। की, जी, लाइफ में जी, हताश होने की जरूरत नहीं है। सो जी। बहुत मजा आया आपसे बात करके खुशहाली, एंड वंस अगेन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। वुड लाइक टू सी यू एज अ ब्रिलियंट सिविल सर्विस ऑफिसर। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू खुशहाली, थैंक